The Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devvrat ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji have arrived. May I request all of you to please switch off your mobile phones or place them on silent mode. Thank you. Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devvrat ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Minister of State for Industries, Gujarat, Shri Jagdish Bhai Vishwakarma ji, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, General Manoj Pandey, Chief of Army Staff, Defence Secretary Dr. Ajay Kumar, Officer on Special Duty, Department of Defence, Shri Armane Giridhar ji, Secretary DD and R&D and Chairman DRDO Dr. Samir V. Kamath, Additional Chief Secretary, Home and Industry, Government of Gujarat, Shri Rajkumar, distinguished guests, participating industries, friends from media, ladies and gentlemen, good evening, and Bandhan ma apno swagat છે. You would recall that at the inaugural of DEF Expo 22, we reiterated that India has always believed in the mantra of Vasudevaya Kutumbakam, which means that the world is one family. We know the power of relationships, the importance of working in unison, and the benefits of growing together on the principle of shared prosperity. Therefore, this gathering here today, which is to forge relationships for business based on mutual trust, is aptly named Bandhan, which means bonds, and marks the summary of business efforts emerging at DEF Expo 22. May I request the Defence Secretary, Dr. Ajay Kumar, to kindly address this august gathering. Good evening, everyone. Honorable Governor Shri of Gujarat, Shri Acharya Devvrat ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Minister of State for Industries, Shri Jagdish Vishwakarma ji, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Air Staff, Air Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, OSD in Department of Defence, Shri Aramane Giridhar, Secretary R&D, Shri Dr. Samir Kamath, Additional Chief Secretary, Home and Industry, Government of Gujarat, Shri Rajkumar, distinguished guests and distinguished leaders from the industry, guests, and members of the media. We have had one of the most outstanding DEF Expos ever in Gandhinagar, Gujarat this year. And as we come towards closing of the business part of this DEF Expo, this DEF Expo which saw the highest number of exhibitors. I thank all the exhibitors who participated in this DEF Expo. We saw tens of thousands of business visitors visiting this DEF Expo, and we expect lakhs of public to be visiting in the next 2 days. But now, as we come to the close of the business part of DEF Expo, it is time to assess what has been the business outcome of this DEF Expo. And sir,
I am very happy to report that, as has been the case with respect to the participation of exhibitors, the extent of business interest this Deaf Expo has generated has surpassed all the previous records. In fact, it has not only surpassed the highest record so far for MOUs and agreements to be signed was in the Lucknow Deaf Expo in 2020, which was 201 MOUs and agreements. Sir, I am happy to report that we are having 451 MOUs and agreements being signed today as part of an outcome of our Deaf Expo. And these MOUs and agreements involve an estimated amount of 1,53,000 crores rupees. I would first of all like to thank so these MOUs and agreements are of various kinds. They are those which have been signed between industry and industry. They are those which have been signed between industry and state governments. There are those which have been signed between industry and the central government. And I would like to thank all the stakeholders who have come forward and shown their commitment for investment in the defense sector in the coming years. This is reflection of the confidence that the industry has, the stakeholders has in government's vision of Atmanirbhar Bharat in defense. Sir, on this momentous occasion, I would also especially like to thank Government of Gujarat, whose total commitment and support throughout the organization of this Deaf Expo has made it possible to have this Deaf Expo with such a roaring success. And Honorable Governor, sir, I would, on behalf of Ministry of Defense, take this opportunity to formally thank Government of Gujarat for all the support that they have rendered to us in the organization of this event. So we are extremely grateful to all the dignitaries on the dais. I do not want to take time by naming everyone again, but it is because of their guidance, especially Raksha Mantri's guidance and overall supervision, that we have been able to scale new heights in Deaf Expo. And I would like to welcome them to this Bandhan event for Deaf Expo 2022 and wish you all the very best, all the industries who are signing the MOUs, the very best for their future, taking these MOUs to fruition. Wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, sir. Bandhan is indeed fortunate that the Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devrat ji, has taken out time to be present with us today. We are grateful to you, sir. May I request the Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devrat ji, to convey his special address at Bandhan. भारत के बहुत ही सम्मानित रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री भारत, माननीय श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, उद्योग राज्य मंत्री गुजरात, आदरणीय श्री अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, माननीय श्री एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी, चीफ ऑफ ऑफिसर एयर स्टाफ, आदरणीय श्री एडमिरल आर हरि कुमार जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ,
आदरणीय श्री जनरल मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी, रक्षा सचिव भारत सरकार, माननीय श्री अरमाने गिरधर जी, ओएसडी रक्षा विभाग, माननीय श्री समीर वी कामत जी, चेयरमैन डीआरडीओ, आदरणीय श्री राजकुमार जी, अधिक मुख्य सचिव गृह विभाग गुजरात, उपस्थित रक्षा मंत्रालय एवं अन्य विभाग के सभी अधिकारीगण, सेना के अधिकारीगण, विदेशों से आए हुए सभी रक्षा मंत्री, प्रतिनिधिगण, उद्योगपति, महानुभाव, देवी और सज्जनों, भारत और गुजरात के लिए ये परम सौभाग्य का क्षण रहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 आज के इस कार्यक्रम के साथ समापन की ओर है। निस्संदेह कुछ समय पहले भारत में जब आत्मनिर्भरता की बात की जाती थी तो एक मजाक सा अनुभव होता था, लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष गौरवान्वित है इस बात के लिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने एक दिशा में नहीं अपितु समग्र आत्मनिर्भरता की ओर देश को आगे बढ़ाया है। एक समय था जब बुलेट ट्रेन की बात होती थी तो इस देश में लोग मजाक करते थे, लेकिन कुल 8 ही साल हुए हैं, इतना बड़ा परिवर्तन। कल मैंने डिफेंस एक्सपो को प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के साथ देखने का सौभाग्य मिला और छाती चौड़ी हो गई कि आज हम इतनी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। एक समय था कि जब रक्षा के छोटे छोटे उपकरण हम विदेशों से खरीदते थे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेना के उपकरणों का आयातक था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, भारत की जनता की ओर से साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत से, कितनी बड़ी इच्छा शक्ति से, कितने आत्मबल से इन 5-7 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि आज फाइटर जहाज हमारे बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ बन रहे हैं, मिसाइल यहाँ बन रही हैं, टैंक यहाँ बन रहे हैं और इतने बड़े बड़े उपकरण मंगाने की बजाय आज हम निर्यात करने की स्थिति में चले गए। इससे बड़ा सौभाग्य भारत के लिए दूसरा हो नहीं सकता। भाइयों और बहनों, आज भारत गर्व के साथ, और एक और बात, भारत की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, हमारे देश का हथियारों का निर्माण और निर्यात दोनों ही शांति के लिए हैं, क्योंकि बिना बल के प्रीत होती नहीं, दुनिया का नियम है। और हम भारत की संस्कृति के लोग उस दार्शनिक चिंतन को लेकर के चलते हैं जहां भारत के ऋषियों ने कहा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम इस सोच के लोग हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, इसका कोई मायना नहीं। हम लोगों ने सारी दुनिया को अपना परिवार माना है और दुनिया के परिवार के लोग आपस में एक बंधन में रहें। आज के इस कार्यक्रम का नाम ही बंधन रखा गया है। हमारे यहाँ बंधक बहुत मंगल सूचक शब्द है।
बंधन का अर्थ कि दो विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं जब एकता के सूत्र में बंध जाती हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, तो वहां पर जो पवित्रता आती है, ऐसा समझौता, ऐसा बंधन दोनों को सुख और शांति देने वाला होता है। तो आज का हमारा ये बंधन, ये एमओयू जो हुए हैं, इनके पीछे हमारी सोच कि हम अनेक राष्ट्रों के जो रक्षा मंत्री महोदय आए हैं, लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि लोग आए हैं, वो सब हम एक परिवार के सूत्र में बंध रहे हैं, हम एक दूसरे के हो रहे हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो रहे हैं। ये हमारा चिंतन है। अब भारत एक नहीं बल्कि अनेक देशों के साथ मिलकर हम एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए हैं। इस सोच के साथ ये एमओयू हो रहे हैं और हमारा ये समझौता विश्व शांति का कारण बने, क्योंकि हमारे यहाँ के कवियों ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हमने इस बात को अच्छी तरह अनुभव किया है। जब बल होता है, शक्ति होती है, बहादुरी होती है, वीरता होती है, आत्मनिर्भरता होती है, तो दूसरा अशांति पैदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारा ये मिशन, भारत की ये सोच सदा विश्व शांति, एकता और भाईचारे की रही है। भारत का सदा से इतिहास रहा है कि हमने किसी भी देश के ऊपर आक्रांता बनकर के, योद्धा बनकर के चढ़ाई नहीं की। लेकिन भारत के यशस्वी हमारे रक्षा मंत्री महोदय के अनेक भाषण में सुनता हूं, वो सदा एक बात कहते हैं, भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं और कोई हमें छेड़ता तो हम उसे छोड़ते नहीं। अब इस चिंतन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इन 2-3 दिनों में जिस प्रकार के हमारी भारतीय कंपनियों ने, हमारे लाखों स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर देश में युवा पैदा हो गए हैं, मैं समझता हूं कि इस डिफेंस एक्सपो को देखकर हमारी युवा पीढ़ी के अनेक स्टार्टअप और तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई क्षमताओं के साथ भारत को आत्मनिर्भर करने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाएंगे। आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में भारत ने कई सौ गुना तेजी से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, हमारे सभी नेताओं की मेहनत और भारत की युवा पीढ़ी का सहयोग और राष्ट्र का समर्पण इस देश को निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है। लंबी बात न करते हुए, जितने भी महानुभाव विभिन्न देशों से आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं और अनेक कंपनियों के हमारे अधिकारी लोग आए हैं, सभी का मैं गुजरात की इस धरती पर पुनः अभिनंदन करते हुए अंत में धन्यवाद करता हूं और मिल करके इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने 3 दिन यहाँ बैठ करके कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, रात और दिन इस राष्ट्र की गरिमा और गौरव को बढ़ाते हुए अनेक एमओयू हुए हैं, अनेक मीटिंग्स हुई हैं और उनमें मिलकर हम सभी राष्ट्र एकता, प्रेम और भाईचारे के लिए विश्व शांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।
Thank you, Honorable Governor, sir. We move to the first category of bandhans, which is the handing over of licensing agreements for transfer of technology of DRDO to companies. May I request the group of companies that I announced to come on stage? Mrs. Astra Microwave Products Limited, Hyderabad. Mrs. Coral Technologies, Bengaluru. Mrs. Mistral Solutions Private Limited, Bengaluru. Mrs. Bharat Electronics Limited, Hyderabad. Bharat Electronics Limited, Pune. They have 3 licensing agreements. Sagar Defense Engineering Private Limited, Mumbai. High Tech Robotics Systems Limited, Gurugram. OMR Bagla Automotive Systems India Limited, Aurangabad. Ask Automotive Private Limited, New Delhi. Adonis Avro, Kanpur. Veterinary Engineering, Salem. Mineral Oil Corporation, Kanpur. Economics Explosives Limited, Nagpur. They have 2 licensing agreements. Munitions India Limited, Bhandara. I would request all the names that I have announced to kindly assemble in a group. We'll have a group photograph because we have 451 bandhans. So we'll share a common photograph with this, under this category. Could you please all collect together? All the 14 names of companies, kindly arrange yourselves around the distinguished dignitaries on the dais. May I request JSDIP and JSNS to kindly come on the D area. Thank you for the group photograph in the first category. As you have all noticed that the pattern of the photograph would be that you take the stairs which are below the main dais. That will speed up and that will also ensure that all of you find yourself in the frame. Kindly make space for the distinguished dignitaries on the dais to be visible. That's important for the group photograph that you'll receive later. Thank you. We move to the next category of bandhans, which is the product launch. May I invite the companies to come on stage. AVNL for the 6x6 modified mine protected vehicle. AWEIL for .32 slide swing revolver AK 630M naval gun.
Bharat Dynamics Limited, anti-tank guided missile for MBT Arjun Mark II, vehicle mounted Amoga 3 anti-tank guided missiles, light support vehicle mounted laser beam riding manpad, GRSC, Make 1 MW 1 megawatt diesel alternator, 5.3 meter carriageway, GRSC 7.5 meter modular steel bridge. So I would request all of you to kindly take the steps below the dais. That will help the photograph come clear. The dignitary is visible. Please take the steps just below the dais. I request all whose names I have announced to kindly take the lower stairs. Your models will come also, please. Please step down to the stairs below so that the next category can come in. BDL, can you please move forward? The next category is Indian Navy handing over of 7662 SRGM ammunition with indigenously developed high explosives shells to the Indian Navy, handing over of AO-18 gun for AK-630 gun, handing over of the indigenous point detonating fuse, indigenous 30 mm HE, practice and HE ammunition, shells for AK-630 ammunition, cartridge submerged signal ejectors. I would request the companies to get their photographs done quickly and move away for the next categories, please. You'd appreciate that our dignitaries on a dais have to take these photographs for multiple times, and 451 is a huge responsibility. The next category is Munitions India Limited, Pune, Aculetics Chemical Private Limited for temporary helipad, Axio Biosolutions Private Limited for 100% chitosan shell dressings for the soldiers, chitosan hemostatic kits for trauma wounds, Ceasefire Industries Private Limited for lithium-ion battery for fire extinguishers, non-magnetic fire extinguishers, water spray fire extinguishers, foam spray fire extinguishers, automatic fire extinguishers. CST Advanced Systems Private Limited, INCAS. May I request all these companies to please come onto the staircase for their photographs. Ceasefire Industries Private Limited, CST Advanced Private Limited, Axio Biosolutions, Aculetics Chemicals Private Limited, and Munitions India Limited, please. Please do walk onto the steps. Thank you. There are 4 more companies that are announced. May I request the representatives to kindly come. Please join into the group photograph. There would not be separate photographs. The next category is DCM Shriram Industries Limited, Raspian Enterprises Private Limited, Greenleaf IT Consulting Private Limited, Cadec Defense Systems Private Limited, Lekha Wireless Solutions Private Limited.
DCM Shriram Industries Limited, Raspian Enterprises Private Limited, Greenleaf IT Consulting Private Limited, Cadec Defense Systems Limited, Lekha Wireless Solutions Private Limited. The next, MG Seating System Limited, Optimized Electrotech Private Limited. SIDM, may I request you to bring all the participating companies together. Swastik Oil, QNew Labs, and New Space Research and Technologies. This would be the last photograph under the category. May I request all of you to kindly come on stage for the group photograph. SIDM, MG Seating Systems Limited, Optimize Electrotech Private Limited, Swastik Oil, QNew Labs, New Space Research and Technologies Limited. May I request all of you to kindly come and take the stairs below. Move on to the major announcements. First of the major announcements is for the Indian Air Force to conclude a contract with Mrs. HAL for procurement of 70 HTT-40 basic trainer aircrafts at the cost of rupees 6,826 crores. The aircraft is indigenously designed, developed, manufactured and certified by Semilac. Def Expo 22 prides itself as being the event wherein the HTT-40 has been unveiled by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. May I request you to kindly come on stage. I would also request HAL, which is the second major announcement. AMD Nasik entered into an MOU with Newcon Aerospace Hyderabad on joint development and manufacturing of electrical motors and electronic LRUs for different platforms. AMD Nasik has also signed an MOU with Premier Explosives Limited on cooperation in the field of manufacturing, assembly, testing, storage and transportation of explosives. May I request HAL representatives also to join into this photograph, please. The third major announcement is the Apollo Aerospace Components India Private Limited. Apollo is now the channel partner to promote and sell products. Astrom Technologies Private Limited has successfully showcased a 10-kilometer range trial of their product Gigamesh, a wireless E-band radio. Bharat Electronics Limited has also developed a lot of products which include RISC-V processor, LATOT for UXOR, Endgame fuse for QRSAM, licensing agreement for TOT with Castic, DRDO, Bell for RWR DR18. May I request all the companies to kindly come on stage for a group photograph. Apollo Aerospace Components, Astrom Technologies, BEL. May also request FICCI to kindly have their representatives for the Quantum Networks, Quantum Secure Private Messenger, Next Generation Secure VPN Solutions, Quantum Security for Apps available for the next group photograph. In addition, Aqua Process Systems India Limited may also join. Idea Forge Technology, kindly join for this group photograph. FICCI, Aqua Process Systems and Idea Forge Technology. Please move to the staircase. May I request Defense Innovation Organization also to line up for the group photograph. We would have three in the next group photograph. Defense Innovation Organization, Government of Gujarat, Government of Uttar Pradesh. All three, may I request the representatives to come to the staircase.
IDEX, Government of Gujarat and Government of UP. The representatives, may I ask you to come up stage? In the mean, Indian Navy, Shingora Textiles Limited, SIDM, Ashok Leland, AVNL, Vimal Fire Kransky Defence Private Limited, Vimal Fire Controls Private Limited, Kransky Defence Technologies Limited, New Infantry Combat Kit, Frontier Protective Wear Private Limited, Trojan Hunt India Limited. Any of you who have missed the name when I have called out, please do come. This is the last in this category. The next category would be exchange of MOUs. I'll announce the names of the MOUs and signatories of the respective companies could come on stages. Pacemaker Solutions, Space Agency ISRO. Surya Wall Care Chemical Private Limited, Government of Gujarat. Raspian Enterprises, Government of Gujarat. Raspian Enterprises, Government of Gujarat. There are 5 of them. Hirji Logic Pack Private Limited with Government of Gujarat. Abhyuday Bharat Mega Defence Cluster Limited. Abhyuday Saurashtriya Vyapar Udyog Mahamandal. Abhyuday with Indian Electronics Semiconductors Association. Abhyuday with Cognitive Design Systems. Abhyuday with Department of Climate Change. Abhyuday with Iron Space ISRO. Abhyuday with Dr. Jeevraj Mehta Institute of Technology. May I request all of you to kindly come for this photograph. Ahmedabad Engineering Manufacturers Association also with Abhyuday. L&T with Government of Gujarat also may join in the photograph. D&D Enterprise Private Limited with Yantra India. GOG with MAN Defence. Raspian with Anesthesia Company. Raspian with Adler. Raspian with Pardus. Raspian with Rite Arms Limited. Index TB with AVNI and Wellspun Corporation. May I request all of you to kindly come for the group photograph. The next batch I'll announce, you can all move to the D area. AeroArc, Skydio, Aeroalloy Technologies Limited, Safran Aircraft Engines, Alpha Design Technologies, Elbit Systems, C4I and Cyber Limited, Alpha Designs with TPT Global Tech Inc., Boeing India with AIESL, BSS Advanced Technologies Private Limited with IIT Roorkee, BSS Advanced Technologies with Laser Systems JSC, BSS Advanced Technologies with OOO High Technological Developments, BSS Advanced Technology with EVPU Defense, BSS Advanced Technologies with NPPF Spectre, BSS Materials Limited, Bharat Supply and Support of Military with Electronic Sensor Technology USA, BSS Material Limited with Free Flight Technology, BSS Materials with Griff Aviation, BSS Materials with MC2 Technologies. May I request all of you to come on to the staircase. BSS Material with NAQWA LLC. BSS Materials with PGW Defense Technologies. BSS Materials with Robinson Armament. BSS Materials with Schmidt and Bender. All who have signed with BSS Materials may move up for this group photograph. The next for the D area are Centum Electronics Limited with Indra Sistemas SS Spain, Centum Electronics with Rafael Israel, Centum Electronics with Drone Vayu Private Limited, Chainbridge Propellers India with Dynatron Services Limited, Mason Valves India with OSK India Private Limited, OSK India with Infitron Advanced Systems, Data Patterns with Saab Sensors,
Systems Germany, DSPL with Willow Pumps, DSPL with Maison Valves India Limited, D&D Enterprises with Vidarbha Defence Industries Association, JN Taurus with Jindal Defence, Lekha Wireless Solutions Private Limited. May I request you to walk to the staircase for the group photograph. The next are Lockheed Martin Corporation with Garuda Aerospace Private Limited, Merlin Hawk Aerospace with L3 Harris Technologies, New Space Research with National Aerospace Laboratories, CSIR, New Space Technology with ADA, New Space with Bharat Dynamics Limited, SIDM with Norwegian Special Mission, SIDM with BP Engineers, Optimized Electrotech with India Optel Limited, Punj Corporation with JSC, Ural Gonzavod Russia, Kransky Defense Technologies, JSC Marine Equipment Engineering Corporation, Inverbras Electricals with Brisk Olive Business Solutions, MKU Limited with Hensoldt Optronics, SMPP with Stride Group. May I request all of you to kindly move to the staircase. For the next photograph, it would be Trojan Hunt India LLP with Fox IT Netherlands, the same company with CryptoWorks Portugal, the same company with Astil Honeycomb Limited, the same company with Pradio Security Systems, same company with Data Resolve Technologies Private Limited, Verman Manufacturing Integration Private Limited and Everest Technologies Israel, Zealtech Enterprises Private Limited with Sphera Test and Services, Zero Sum Technologies with Sky Power International, Elbit Systems with Garuda Aerospace. This is the last batch under this category. In the next batch, we have HAL with 19 MOUs and BDL with 15 MOUs. I'll announce the MOUs, but I request all of you for the HAL MOUs and BDL MOUs to kindly move on stage. HAL with 19 MOUs and BDL with 15 MOUs. This will be a group photograph. Kindly bring all your representatives collectively so that we can have this photograph done collectively. HAL Lucknow with Bhagwati Filters, HAL Lucknow with BP Engineers Private Limited, HAL Lucknow with Polyhose India Limited, HAL Nasik with Mahindra Aerostructures, HAL Bangalore, HAL Nasik with Kongsberg Defence and Aerospace Norway, HAL Nasik with New Space Research and Technology Bangalore, HAL Nasik with Club One Air, HAL Nasik with Aman Aviation, HAL Nasik with Go Airlines, HAL Bengaluru with Midhani, HAL Kanpur with Mrs. Warrior, Mrs. Millennium Aerodynamics Private Limited, HAL OD Bangalore with Aerospace Engineers Private Limited, HAL Bangalore with Bliss Aerospace Components Private Limited, HAL Bangalore with Gliders India Limited, HAL Bangalore with Fluidine, HAL Bangalore with DDS Group, HAL Nasik with New Space Research and Technologies, HAL Nasik with IAI Malad Division, HAL Bangalore with Prudent Communication System Limited, BDL with Mahindra Defence Systems, BDL with Munitions India Limited, BDL with PTC Industries, BDL with BHEL, BDL with New Space Technologies, BDL with New Space Research and Technologies, BDL with Radiant Advanced Systems, BDL with Goa Shipyard, BDL with Rafael, BDL with Rafen Mifir Private Limited, BDL with Optimized Electrotech, BDL with Dassault Aviation, BDL with Ashok Leland, BDL with IIT Roper, BDL with Elcom Integrated Systems Private Limited. For the next batch, it is BEL 19 MOUs and Midhani 12 MOUs. May I request all of you to collectively come for the next photograph? So BEL 19 MOUs and Midhani 12 MOUs, please do come. For BEL, Yantra India, Profence, Armored Vehicles Limited, AWIL, Munitions, Safran, Hindu HSL, Robert Bosch Engineering, Truecom Network Private Limited, Motorola Solutions, Goa GSL, Safran Electronics, INRE Private Limited, IIT Madras, Rail Vikas Nigam, Safran Electronics, Aerosense Technologies, Meslova Systems. Midhani will be Skyroot Aerospace, AVNL, Yantra, AVNL, Carborundum Universal Limited, India Government Mint, IAF, TIDCO, UPIDA, BITS Hyderabad, HAL F&F, PTC Industries.
Please do quickly line up on the staircase. Our distinguished guests are more than willing for this group photograph. We are so grateful to them. Thank you, sirs. The next batch, AVNL 13 MOUs, BEML 8 MOUs, GRSE 13 MOUs, GSL 10 MOUs, HSL 8 MOUs, MDL 24 MOUs, MIL 15 MOUs. We want to make this a big Bandhan photograph, so please move up on the staircase. I repeat that again. This is going to be a big Bandhan photograph. Please line up on the staircase. The camera will cover you wide and square. All those, please do space out. There's a lot of, we've made a big stage for all of you. I would also request members we'll have one more after this, which will be for the batch 6, the ones who are left out. We'll have the next one. Please wait patiently. There's one last photograph we'll take. Allow the people on the D square to move away so the others can come in. Thank you, ladies and gentlemen. Please move to your right. The other photographs can come. Please, I request you all to kindly move away so that the others can come in. This will be the last photograph of the evening. This photograph is AWIL 12 MOUs, GIL 7 MOUs, TCL 13 MOUs, 6 MOUs of IOL, 13 MOUs of Troops Comfort India, and 9 MOUs of Yantra India Limited. I would also request the Government of Uttar Pradesh, IAF, Indian Navy, Government of Tamil Nadu representatives to join in the photograph. They have done extremely well. UP has done 40 MOUs, IAF has done 8 MOUs, Indian Navy 18 MOUs, and Government of Tamil Nadu 6 MOUs. IDEX has done 8 MOUs. Ladies and gentlemen, give yourselves a big hand because it's a lot of MOUs. And this is also a gratitude to the distinguished guests on the dais. Thank you, sirs. May I request all of you to kindly leave the dais back to your chairs as the dignitaries take their seats. I would also request all of you not to take selfies. Kindly please leave the staircase. Please do not take selfies. May I request all of you to kindly take the chairs. Please do hear what I am requesting. Kindly do not take selfies. Kindly move away from the stage. We request you not to climb up and take selfies. Sirs, ladies, gentlemen, please do take your chairs. May I request all of you to take your chairs. Thank you. I would request you to kindly hear this out. You are going to consume a lot of time of the dignitaries. Please do clear away. We have another part of the ceremony. May I request you to kindly take your chairs. We are not a presentable audience as of now. Sirs, please clear the D area. I would request the others to usher the ladies and gentlemen back to their seats. We request you to take your chairs. You've done extremely well to give us 451 MOUs. We thank you and we encourage you to probably double the number. We hope you've got your photographs in big numbers.
truly synonymous with Vasudevaya Kutumbakam. We're just waiting for all of you to settle down. Do find your chairs, the closest chair you can. Do not go back to your own original chair. Whichever chair you find the closest, please settle yourself. Please settle down. Ladies and gentlemen, you are keeping me from announcing something that we are all eagerly waiting for. Please do take your chairs. I am as excited to announce as you are excited to hear. So, this is a great privilege to invite you for the valedictory address. The entire crowd here has been ecstatic through the 3 days of business. May I now invite the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to convey the valedictory address. परमादरणीय आचार्य देवव्रत जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात, केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, श्री जिंगेश भाई ईश्वर भाई विश्वकर्मा, एमएस फॉर इंडस्ट्रीज गुजरात स्टेट, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल आर. हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डॉक्टर अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री अरमाने गिरधर, ओएसडी टू डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डॉक्टर यशवी कामत, चेयरमैन डीआरडीओ, श्री राजकुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात, ऑफिशियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, young entrepreneurs, academicians, ladies and gentlemen. देश के अब तक के सबसे बड़े डेफ एक्सपो के समापन समारोह में आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। इस आयोजन की अभूतपूर्व सफलता पर मैं स्वयं को भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज यहां पर बंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो मैरिड हैं वह कम से कम घर में जाकर बतला दें कि हम यहां पर आकर किस बंधन में बंधे हैं। इसको क्लैरिफाई कर दें, नहीं तो मुसीबत भी हो सकती है। साथियों, गुजरात हमारे देश के उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सदियों से अपना योगदान देता आ रहा है। इसके अलावा चाहे वह देश में बहती आध्यात्मिक धारा हो, राजनीतिक धारा हो, वैज्ञानिक धारा हो या फिर औद्योगिक धारा हो, वह गुजरात से जरूर प्रभावित रही है। महान संत नरसी भगत से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महात्माओं ने न केवल भारतीय अध्यात्म धारा को प्रभावित किया है, बल्कि समाज सुधार में भी एक अपना अहम योगदान दिया है। राजनीतिक दुनिया में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में अपनी जगह बनाई है और आज की राजनीति के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात की ही देन है। यहीं के ही डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिन पर पूरा देश गर्व करता है। इसी तरह उद्योग की दुनिया में जमशेद टाटा से लेकर धीरू भाई अंबानी तक अनेक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दी है। साथियों, पिछले कुछ दशकों में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मॉडल
गुजरात ने प्रस्तुत किया है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और आज जब डिफेंस एंड एरो स्पेस सेक्टर हमारी इकॉनमी में अपना योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सेक्टर के महत्वपूर्ण प्रतीक डेफ एक्सपो के आयोजन के लिए गुजरात से बेहतर शायद कोई और दूसरी जगह नहीं हो सकती थी। साथियों, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में विश्व के मानचित्र पर आज भारत का एक विशेष स्थान है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए देश ने एक लंबी यात्रा तय की है, जिसमें डेफ एक्सपो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 24 वर्ष पूर्व शुरू हुए डेफ एक्सपो का यह 12वां बड़ा कदम रहा है और इतने वर्षों में इसने इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री की अनेक जरूरतों को भी पूरा किया है। इस इवेंट ने डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में उभारने में भी एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज डेफ एक्सपो 2022 का समापन हो रहा है और इस समापन के साथ ही इंडियन डिफेंस सेक्टर की सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का एक नया अध्याय भी प्रारंभ हो रहा है। यह आगाज है इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता के एक नए दौर का। यह आगाज है इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता के एक दौर का, जिसमें यह एक नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। महज 3-4 दिनों के इस आयोजन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत रक्षा के क्षेत्र में बस सशक्त, समृद्ध और समर्थ ही नहीं हुआ है, बल्कि विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से भारत तैयार है। यह आयोजन एक शंखनाद था, जिसने बड़े ऊंचे स्वरों में दुनिया को यह बताया कि आने वाला समय यह भारत का होगा। एक उद्घोष था कि भविष्य में हमारा देश ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया केंद्र बनेगा। और साथियों, इस आयोजन के उद्घाटन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वयं यहां उपस्थित होना और बड़े इंटरेस्ट के साथ यहां की गतिविधियों को देखना, स्टॉल्स विजिट करना, इस बात का प्रमाण है कि इस आयोजन को लेकर वह अत्यंत उत्साहित थे। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और नीतियों के कारण पूरी दुनिया में भारत का स्टेचर बढ़ा है। विश्व पटल पर भारत ने एक अपनी छाप छोड़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। उनकी प्रेजेंस ने इस इवेंट को और भी ग्रेस एवं भव्यता प्रदान की है। उनके विजन के अनुसार हमारा देश न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन का बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करेगा। और आप सबको जानकारी है कि हमारा एक्सपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्य की प्राप्ति में इस डेफ एक्सपो का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। और साथियों, मुझे कहते हुए अत्यंत संतुष्टि का अनुभव होता है कि डेफ एक्सपो का यह 12th एडिशन काफी शानदार और सफल रहा है और मैं कह सकता हूं कि अब तक जितने भी डेफ एक्सपो हुए हैं, सबसे शानदार और सफल यदि कोई एक्सपो रहा है तो यह हमारा गुजरात में होने वाला डेफ एक्सपो रहा है। कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स का पार्टिसिपेशन और दुनिया भर से बड़ी संख्या में आए बिजनेस लीडर ने इस मेगा इवेंट में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। मुझे विश्वास है कि डेलीगेट्स ने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के उभरते हुए केंद्र के रूप में नए भारत के जोश और उत्साह को उन्होंने भी देखा होगा। साथियों, व्यक्तिगत जीवन हो, समाज जीवन हो या राष्ट्र जीवन हो, वह तभी कोई इतिहास रचता है जब किसी लक्ष्य को लेकर उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर एक उत्साह होता है।
स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन और आईटी रिवॉल्यूशन तक देशवासियों के उत्साह के चलते ही हमें कामयाबी हासिल हुई है, हमें सफलता मिल पाई है। उत्साह को लेकर हमारे यहां कहा गया है, करोति सफलम जंतो कर्म यत् करोति सह, यानी उत्साह ही हमेशा प्राणियों को उनके कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें सफलता भी दिलाता है। उत्साह नहीं होगा तो हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं रहेगी। ऐसे में आज उत्साह की जो एक नई धारा में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं, वो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कुछ ही समय पहले कोविड-19 पैंडेमिक की भयानक मार से प्रभावित होने के बावजूद डेफ एक्सपो 2022 का सफलतापूर्वक आयोजन नए भारत के उत्साह, वाइब्रेंट एनर्जी और इनडोमिटेबल स्पिरिट को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि इस डेफ एक्सपो में स्टार्टअप मंथन, इन्वेस्ट फॉर डिफेंस, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और बंधन जैसे कई इवेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। साथियों, इंडियन ओशन रीजन का हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना है, यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये बेहद हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इलाका है और इस इलाके में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था बनाए रखने और हमारे सम्मिलित व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर की परिकल्पना की थी। और इस विजन को पूरा करने के लिए इवेंट में IOR प्लस कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया था। शांति, सुरक्षा और सहयोग की थीम पर आधारित इस कॉन्क्लेव में लगभग अनेक देशों के मंत्रियों और डेलीगेट्स ने अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। और मित्रों, आपको यह मैं जानकारी देना चाहता हूं कि चाहे वह इंडिया और अफ्रीका ये कॉन्क्लेव रही हो, अफ्रीकन कॉन्क्लेव रही हो, चाहे IOR प्लस की यह कॉन्क्लेव रही हो, भिन्न भिन्न देशों से आए डिफेंस मिनिस्टर्स ने, उन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत के प्रति जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं, सचमुच मेरा मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है कि भारत के प्रति सारी दुनिया की धारणा कैसे बदली है। यह बात उनकी बातों को सुनने के बाद समझ में आती है। मुझे इस डेफ एक्सपो के साइड लाइन्स पर विभिन्न मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बाइलेटरल मीटिंग्स करने का भी अवसर मिला है। एक तरह से यह डेफ एक्सपो दुनिया के विभिन्न देशों के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने और म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक फोरम बन गया है। और साथियों, डेफ एक्सपो 2022 की शानदार सफलता दुनिया के अन्य देशों के हाई लेवल डेलीगेशन और बड़ी संख्या में कंपनियों के एग्जीबिटर्स की अभूतपूर्व भागीदारी से स्पष्ट है कि कितना सफल रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होने के कारण विभिन्न देशों के पार्टिसिपेंट्स ने इस मेगा इवेंट में वर्चुअल मोड से भी पार्टिसिपेट किया था। जो हमारी ये इंडो अफ्रीकन और IOR प्लस ये जो कॉन्क्लेव हुई थी, बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर्स और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्चुअली भी अपने विचार व्यक्त किए थे। और साथियों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बंधन सेरेमनी ने कई मामलों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। और मुझे बताया गया है कि इस इवेंट में बड़ी संख्या में जो MOUs, प्रोडक्ट लॉन्चेज, मेजर अनाउंसमेंट्स, बिजनेस एंटिटीज के साथ DRDO के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुए, जो देश में उभरते रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम का एक प्रमाण है। यह निश्चित रूप से मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के हमारे लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि आज हमारे द्वारा किए जा रहे MOUs हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयासों की सीरीज में एक यह और सिग्निफिकेंट स्टेप है। इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा
जिनके प्रयास व डेडिकेशन ने इन एमओयूज के फाइनलाइजेशन में योगदान दिया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को उनके ट्रस्ट एवं गुडविल के लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके प्रयासों से इन एमओयूज पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को सेल्फ रिलायंट और उसे ग्लोबल सप्लायर बनाते हुए इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स पर बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता हमारे लिए बड़े ही एक गर्व की बात है और यह 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में मदद होगा। आज मैं 35,000 करोड़ जो मैं कह रहा हूं, अब हम लोगों का अनुमान है कि यह 40,000 करोड़ यह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। मुझे विश्वास है कि डेफ एक्सपो 2022 के उत्साह और जोश को पॉजिटिव कोलैबोरेशंस के साथ नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा। यह डिफेंस कंपनीज के बीच बिजनेस एंगेजमेंट्स को इन्हांस करते हुए भारत को डिफेंस प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और भारत के विजन एट 2047 तक पहुंचने में भी यह हमारी मदद करेगा। साथियों, यहां मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र में हमारी मजबूती का प्रयास किसी भी दृष्टि से अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं है। भारत ने संपूर्ण विश्व को हमेशा अपना परिवार माना है और सबके कल्याण और विश्व शांति की भावना से ही भारत आगे बढ़ा है। जैसा महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा, यह देश आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी हम अपना मोक्ष भी चाहते हैं तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम अपना मोक्ष चाहते हैं। यह सोचने वाला भारत है। यानी व्यक्तिगत और जगत के सामूहिक हितों को साथ लेकर चलने की यह बहुत ही पुरानी परंपरा हमारे भारत में रही है और मैं रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हमारे इसी प्रयास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। साथियों, यह डेफ एक्सपो इतना भव्य रहा, इतने सुचारू रूप से इसका पूरा संचालन रहा कि अनेक लोगों ने मुझसे पर्सनली इसकी सराहना की है। लेकिन मैं मंच पर बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी सफलता नहीं है बल्कि उन सभी अधिकारियों स्टाफ की है जिन्होंने इसके आयोजन में दिन रात एक कर दिया है और यह सफलता उन एग्जिबिटर्स की है जो दूर दूर से आए और डेफ एक्सपो में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके अपने बिजनेस को प्रमोट किया है। यह सफलता गुजरात सरकार की है जिसके सहयोग से यह कार्यक्रम इतना सुनिश्चित और व्यवस्थित तरीके से हो पाया है और हमारे यहाँ तो इसी गुजरात कैडर के रहने वाले मिस्टर राजकुमार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन रह चुके हैं और मैं जानता था वहां पर हैं तो इस डेफ एक्सपो की वो विशेष रूप से चिंता करेंगे और मैं देख रहा हूं कि लगातार वो बराबर व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जिनके नेतृत्व वाली गुजरात सरकार का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है और मैं धन्यवाद देता हूं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सभी डीपीएसयूज को जिनकी पूरी टीम ने दिन रात एक करके इस आयोजन को कामयाब किया है। मीडिया के हमारे साथियों के प्रति भी मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप लोगों ने इस इवेंट को सचमुच एक विशाल सफलता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। आपने देश और विदेश में डेफ एक्सपो का पर्याप्त प्रचार किया है। विश्व में भारत की एक नई और सशक्त छवि के निर्माण में
आपके योगदान की भी मैं जितनी सराहना करूं वह कम है। साथियों, यह इवेंट हमें एक संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि अपनी प्रगति की राह पर न तो हम कभी थकेंगे और न कभी हम थमेंगे, न ही किसी भी बाधा के सामने रुकेंगे और न ही किसी समस्या के सामने हम झुकेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे मन में यह संकल्प हमेशा बना रहेगा और यही संकल्प लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं डेफ एक्सपो 2022 की बड़ी सफलता बनाने के लिए एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और जो बंधन का कार्यक्रम यहाँ पर आज हुआ है उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Raksha Mantri, sir. May I request the Additional Chief Secretary, Home and Industry, Government of Gujarat, Shri Rajkumar, to kindly convey the vote of thanks. Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devrat ji, Honorable Raksha Mantri, Government of India, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Rajya Raksha Mantri, Government of India, Shri Ajay Bhatt ji, Honorable Minister of State for Industries and Road and Building Department, Government of Gujarat, Shri Jagdish Vishwakarma ji, Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan ji, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary ji, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar ji, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey ji, Defence Secretary, Government of India, Dr. Ajay Kumar, OSD, Department of Defence, Government of India, Shri Girdhar Armane ji, Secretary R&D, Department of Defence and Chairman DRDO, Dr. Sameer Kamath ji, distinguished dignitaries, leaders from aerospace and defense industry, friends from the media, ladies and gentlemen. Good evening and namaskar. It's my proud privilege to be back among my friends and colleagues of Ministry of Defense and DPSUs, members of the industry. It's my honor to propose a vote of thanks on the conclusion of Bandhan ceremony as part of 12th edition of DEF Expo. On behalf of Government of Gujarat, I would like to thank Honorable Prime Minister, Honorable Raksha Mantri ji for giving Gujarat this great opportunity to host Asia's largest and India's flagship defense exhibition, DEF Expo 2022 here in Gujarat. Thank you, sir. Aligned with Honorable Prime Minister's vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat, DEF Expo 2022 with the theme of Path to Pride has showcased India's tremendous potential to become a leading manufacturer as well as global supplier of defense products and technology solutions. We are deeply grateful to the Honorable Governor of Gujarat, Acharya Devrat ji, for presiding over this function for an insightful and inspiring address. My heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister of Gujarat and Honorable Minister of State for Industries for their continuous guidance and support that has helped Gujarat in hosting this largest ever edition of DEF Expo. It's our privilege as Government of Gujarat to host Honorable Defense Ministers from more than 30 countries, along with Chief of Defense Forces, ambassadors, High Commissioners, senior government officials, esteemed guests from more than 75 countries. I hope they all and you all have enjoyed our state Gujarat's warm hospitality. My sincere gratitude to Dr. Ajay Kumar, Defense Secretary, and all officials from Ministry of Defense, Government of India for their extensive support in planning and organizing
the event of this scale and grandeur. I also take this opportunity to welcome Shri Girdhar Armane, OSD, Department of Defense, and wish him all success in the new assignment. This edition of Def Expo saw an overwhelming response from aerospace and defense industry with participation of more than 1,300 exhibitors spread across 1 lakh square kilometers at Helipad Exhibition Center. Today, we have witnessed the signing of more than 451 MOUs, including product launches, transfer of technology, out of which 28 MOUs and 1 product launch were from Gujarat. I am confident that these will help in furthering the vision of Honorable Prime Minister for Atmanirbhar Bharat in the aerospace and defense sector. My sincere thanks to the captains of aerospace and defense industry, startups, MSMEs, as well as industry associations in making this edition of Def Expo a grand success. I would like to specifically thank our industry partners and associations from Gujarat Chamber of Commerce and Industry for who have extended their full support and participation during the entire event. My deepest appreciation to colleagues from Government of Gujarat, various committee members, officers and staffs of allied agencies, police force who have worked day and night to make this event grand success. We are also grateful to our friends from the media for covering Def Expo 2022 extensively. Yesterday's drone show in Gandhinagar, which was one of the largest in India, comprising 1,600 drones, has enthused one and all. We are also witnessing overwhelming participation from citizens in large numbers to witness live demonstration by our defense forces at Sabarmati riverfront, as well as for the naval display at Porbandar. Thank you. I am also hopeful that we will have participation of our youth in large numbers for the exhibitions at Helipad Exhibition Center during next 2 days to learn more about the latest defense technologies and get inspired by our defense forces. On behalf of Government of Gujarat, I once again thank all our esteemed and distinguished guests and participants for attending the 12th edition of Def Expo 2022 in Gujarat. It has been my pleasure, our government's pleasure, to host all of you in Gujarat. Thank you so much. Namaskar. Bharat Mata ki jai. Ladies and gentlemen, may I request you all to kindly rise for the national anthem.